नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदया, उपस्थित अतिथिगण एवं प्रशिक्षु अधिकारीगण, मैं तन्वी सोनी आज के राष्ट्रपति महोदया के उद्बोधन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपने अपने व्यस्त जीवन से अपना बहुमूल्य समय प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आज ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन में आपकी गरिमामय उपस्थिति में होना हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष CBIC से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा के समक्ष अपना स्वागत संबोधन रखें। Honorable President of India, Secretary to President, respected Military Secretary to Honorable President, senior officers at Rashtrapati Bhavan, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, my colleagues from the Indian Revenue Service, Indian Audit and Account Service, and Indian Statistical Service, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great honor and privilege for all of us, especially the young officers present here, to have this opportunity for interaction and meeting with the Honorable President. I can say with firm conviction that having an audience with the head of state is a proud moment every young officer of the government looks forward to. Madam President, I express my deepest gratitude for taking out time from your busy schedule for this occasion. The Indian Revenue Service, Customs and Indirect Tax is a unique service as its officers play a vital role in safeguarding the economic frontiers of the country. They discharge the sovereign function of tax collection and act as guardians of the economic frontiers of the nation. Madam, the 73rd batch of Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes comprises of 26 officer trainees, of which 9 are lady officers trainee. The batch brings with it diversity in terms of geography and culture and represents both rural and urban areas of 14 states and 3 union territories. The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, or NASN as it is popularly known, is the apex institution of the Government of India for training and capacity building in the field of indirect taxation. It plays a critical role in molding tax administrators through domain, functional and behavioral learning into a professional, citizen-centric civil servant in an ethical and transparent framework. It imparts the skills and knowledge required to prepare future leaders to serve the needs of the fast-changing realm of indirect tax administration. It is the premium National Academy which is integrating and inculcating the spirit of the mission Karm Yogi in future bureaucracy of the Government of India. NASN, through its training curriculum, ensures better governance, efficient, effective and accountable public administration. Further, NASN is in the process of transitioning from Faridabad to Palasamudram, Andhra Pradesh, in a 500-acre state-of-art campus with a vision to make India an international hub of training in indirect taxes and customs. These young officers have been trained in subjects like customs, GST, narcotics, smuggling of drugs, arms and ammunition. They have also been trained in various aspects of national security, terror financing, cyber and digital forensics, anti-money laundering, big data, artificial intelligence, global trade and taxation, and other relevant areas to enable them to appreciate and anticipate the emerging challenges at global and local level. Besides the 26 officer trainees of Indian Revenue Service, 28 officer trainees of the Indian Audit and Account Service, including 2 officers from the Royal Bhutan,
Royal Audit Authority, Bhutan, and 27 officers, trainees of the Indian Statistical Service are also present. The officers from these services also represent the geographical and cultural diversity of the country and come from varied educational background. The Indian Audit and Account Service is a Group A central civil service under the Comptroller and Auditor General of India. Its officers are responsible for auditing the accounts of the Union Government and the state governments, as well as public sector undertakings and several non-commercial autonomous bodies. The Indian Statistical Service was constituted in the year 1961 with the objective of institutionalizing a core professional capacity within the government to undertake statistical analysis and render advice for designing and formulating development policies, strengthening delivery systems, and monitoring and evaluating the public programs. I have no hesitation in saying that the officers present here will serve the country with honor, integrity, and dignity, and would be the visionary leaders who would be the drivers of change in times to come. Madam, in their journey as civil servants, they seek your blessings and look forward to your guidance so that they excel in discharging the public duties entrusted upon them by the great nation. The interaction today will be immensely beneficial to all of them and will be cherished throughout their lives. As I conclude, I would once again like to express my heartfelt gratitude to the Honorable President for this interaction with the officers of Indian Revenue Service, the Indian Audit and Account Service, and the Indian Statistical Service, which will undoubtedly inspire and commit them to the dedicated service of our nation. Thank you, ma'am. Jai Hind. माननीय राष्ट्रपति महोदया, सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे साथी प्रशिक्षु अधिकारीगण, आप सभी को सादर अभिनंदन। मैं अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव, भारतीय सांख्यिकी सेवा के 2023 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। महोदया, आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी विशेष सभा में आप सभी के समक्ष अपने बैच के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशिक्षण के हमारे सामूहिक अनुभव को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पिछले 9 महीने की हमारी प्रशिक्षण यात्रा को संक्षेप में बताना चाहूँगा। महोदया, हमारी प्रशिक्षण यात्रा का प्रारंभ 3 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ग्रेटर नोएडा से हुआ, जहां हमें विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में सांख्यिकी के उपयोग और उनके गणना की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही शारीरिक विकास के लिए हमें व्यायाम एवं योगासन का भी अभ्यास कराया गया। महोदया, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ सांख्यिकी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। आज सांख्यिकी विधाओं का उपयोग कृषि, अर्थशास्त्र, श्रम एवं उद्योग तथा वित्तीय प्रबंधन आदि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। बढ़ते उपयोग को देखते हुए हमारा प्रशिक्षण इन क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में भी कराया गया। हमें यह अंतः विषयी प्रशिक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। महोदया, सांख्यिकी के अलावा प्रबंधन के तकनीकी कौशल, व्यवहार कुशलता, कार्य और जीवन के बीच संतुलन एवं नेतृत्व क्षमता के लिए हमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में 2 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया गया। महोदया, हमने हाल में ही अपना 15 हफ्ते का आधारभूत प्रशिक्षण यानी फाउंडेशन कोर्स RCVP नरोन्हा अकादमी भोपाल से पूर्ण किया है। इस प्रशिक्षण में हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ हमें अनुशासन, समयबद्धता, अंतः सेवा सौहार्द और सहयोग, जिससे कि सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, पर भी प्रशिक्षण दिया गया। महोदया, इस प्रशिक्षण के दौरान हम उच्च ऊंचाई वाले ट्रैक पर भी गए। इस यात्रा में आई कठिनाइयों से हमने सीखा कि कैसे कम संसाधनों के बीच जीवन यापन किया जा सकता है। यह हमें दिन प्रतिदिन प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। महोदया, साथ ही हम गांव के दौरे पर भी गए, जहां हमें ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और जटिलताओं से परिचित कराया गया। यह दौरा हमारे लिए विशेषता उपयोगी रहा। इसकी वजह यह है कि भविष्य में अपने कार्य निष्पादन के तहत जब हम आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह के लिए
दुर्गम स्थलों पर जाएंगे, भिन्न भाषा और बोली के लोगों से मिलेंगे, उस वक्त हमें उनकी समस्याओं को समझने और उनसे संवाद स्थापित करने में मदद मिलेगी। महोदया, पिछले 9 महीने के प्रशिक्षण के दौरान हमें देश के दूसरे राज्यों और क्षेत्रों की संस्कृति, रीति रिवाज, व्यंजन, कला एवं शिल्प को देखने और जानने का मौका मिला। यह हमें अपने कार्य के दौरान देश के किसी भी स्थान से कम समय में परिचित होने की परिपक्वता को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। महोदया, आंकड़ों के संग्रह में सटीकता और उसके प्रसार के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ एक कुशल मानव संगठन का निर्माण करना आवश्यक है। इस मानवीय दक्षता को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महोदया, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों को उपयोग हम अपने नागरिकों को उनके देश की प्रगति की स्थिति का निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए करेंगे। अंत में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक कर्मयोगी के रूप में हम समाज के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद। अब मैं भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रशिक्षु अधिकारी मिस पूजा कदम को अपने अनुभव साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उपस्थित मान्यवर और मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारी, सबको मेरा प्रणाम। मैं पूजा अशोक कदम भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर की 73वें बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की रहवासी हूँ। लातूर के छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के इस सफ़र में मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे दृष्टिबाधिता, मेरे परिवार और मित्रजनों के विश्वास ने और डिजिटल भारत के विकसित तंत्रज्ञान ने मेरा रास्ता सुलभ कर दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष अपने 2 वर्षों के प्रशिक्षण अनुभव को रखते हुए मुझे बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। महोदया, हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान संपादन नहीं, परंतु उसकी उपयोगिता से वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है। हमारी अकादमी ने कर कानूनों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जिसमें प्रायोगिक रूप से सर्च ऑपरेशंस और मूड कोर्ट्स को जोड़ा गया। इस सफ़र में विशेष राष्ट्रीय संस्थान जैसे IIPA, NPA, कोस्ट गार्ड इत्यादि के साथ जुड़ाव से सुप्रशासन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण का विकास करने में हमें मदद मिली। महोदया, पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए हमारी अकादमी ने अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक हित, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे अनेक विध गतिविधियों में प्रशिक्षुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामतः हम सभी में सौहार्द, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सामूहिक कार्यक्षमता, इन गुणों का विकास हुआ। वैयक्तिक रूप से मैं ये प्रशिक्षण सर्वसमावेशकता का प्रतीक मानती हूँ, क्योंकि यहाँ विशेष ज़रूरतों वाले प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। मैं मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रोत्साहन से ट्रेकिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसे कठिन उपक्रमों में अपना सहभाग दर्शा पाई। इन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। महोदया, यह बड़े खुशी की बात है कि हमारे कुल राजस्व प्राप्तियों में से GST तथा अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा लगभग 34% है। इसका उपयोग हम समाज हित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में करते हैं। हमारा भारत देश आज 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए आकांक्षी है। मुझे यकीन है कि मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रमों से रूल बेस्ड व्यवस्था की जगह रोल बेस्ड व्यवस्था लाने के लिए हम सफल रहेंगे। आंतर सेवा सहयोग के साथ हम राजस्व सृजन तथा व्यापार सुलभता में अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे। महोदया, हमारे पदों, अधिकारों को गांधी जी के विश्वस्त की संकल्पना के तहत देखना मुझे उचित लगता है। हमें जो पद मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, हम सबके विश्वस्त है और इसका सर्वोत्कृष्ट उपयोग हम देश सेवा में करेंगे। हमारे कर्तव्य काल में हमारे मस्तिष्क में सृजनशीलता, आंखों में नए सपने, मन में नई आशाएं, भुजाओं में बल और हृदय में करुणा को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ संस्कृत पंक्तियां मुझे याद आ रही है। कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम वितरन्तो नव संदेशम घटयामो नव संगठनम रचयामो नव इतिहासम। महोदया, इन पंक्तियों के अर्थ स्वरूप हम सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि एक नए दृढ़ संकल्प के साथ, एक नए संदेश को देते हुए, एक नए संगठन के रूप में हम नए भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Honorable President of India, respected dignitaries present here, a very good morning to all of you.
My name is Akhila BS, and I hail from a small village in Thiruvananthapuram district of Kerala. My aspiration to pursue higher education in a premier institute of the country took me to IIT Madras, where I completed my integrated masters in development studies. The pursuit of a greater purpose to be part of the esteemed civil services led me to the National Academy of Audit and Accounts. Today, I stand before you, ma'am, as an IA&AS officer trainee with a profound sense of honor and gratitude. It's truly a privilege to take you, ma'am, through the initial 50 days of my service training. The first thing that struck me about the 2023 cohort of officers is the intellectual, cultural, and academic diversity of the batch. In this very short span, the chilling deck of Yaros and warm rooms of Cedar stood witness to beautiful friendships being forged among us. Together, we set out on a transformative professional odyssey. Venturing into the hitherto unfamiliar domains of accountancy and audit concerned me in the beginning. However, a meticulously crafted course structure, along with the guidance of our incredibly patient faculty, made learning an enjoyable and enlightening experience. We have come to realize the significant responsibility bestowed upon us as the guardians of the public treasury, and that our work weaves the fabric of trust between the government and the citizenry. At the Academy, we were motivated to push our physical capabilities with a diverse array of activities like yoga, tennis, table tennis, squash, and weekly treks to the scenic hills and valleys of Shimla. From embarking on the Glen Valley hike in week 1 to conquering a demanding 14-kilometer steep trek to Munalu by week 4, our physical discipline and endurance evolved by leaps and bounds. We also had the privilege to interact with the Controller and Auditor General of India, who urged us young officers to build proactive synergy with other civil services domains to realize the constitutional democratic ethos and the development goals of our country. After a tragic accident that claimed the lives of 2 multitask staff members, colleagues and seniors in the Academy united to pool in resources to support the bereaved families. This meaningful gesture in the time of need showed me that behind the steel frame of Indian Audit and Account Service beats a compassionate heart that cares deeply for its own. Ma'am, as I enter into the forthcoming stages of my training, I aspire to cultivate professional acumen through extensive learning. As a budding IA&AS officer, I'm looking forward to interact, collaborate, and learn from esteemed senior officers and gain invaluable insights from the various government attachments planned for us. I aim to discharge my duties with due diligence, cognizant of the pivotal role the Office of CAG plays in our democracy. As a civil servant, I look forward to serving the citizens with utmost dedication, always mindful of the fact that they are the true masters that we as civil servants are privileged to serve. Thank you. Jai Hind. Dear probationers of Indian Audit and Account Service, Indian Revenue Service, and Indian Statistical Service. At the outset, I congratulate each one of you for your success in the rigorous examinations and making it to the prestigious services. I commend you all for opting to join the public service, which will give you an opportunity to serve the country while holding important positions in the governance system. You can contribute immensely in India's development journey through innovative, smart, and citizen-centric functioning in your respective domains. After listening to your training experiences, I am confident that our young officers are ready to march ahead with confidence, conviction, and commitment. I am glad to see that you all are filled with energy and enthusiasm to take the country forward towards the goal of becoming a developed nation. I am told that during your training you have traveled different parts of the country to get first-hand experience of the diversity and culture of the country and to know about the problems and challenges faced by the people. Dear young officers, when you get posted in various departments, you should always remember that
Your actions and decisions will have an impact on the lives of all the citizens. The integrity, hard work, and sincerity that each of you puts in your work will play a huge role in determining the pace of development of our people. Dear officers of Indian Audit and Accounts Service, you are expected to function as the custodians of public trust and guardians of financial prudence. You should always adhere to the values of truth, transparency, and fairness while making decisions and taking actions. The institutions of the Comptroller and Auditor General is of almost importance in ensuring accountability of government departments and organizations. Last month, I participated in the event organized by CAG to celebrate the Audit Day. I am happy to note that leveraging the technology, the institution of CAG is moving towards paperless audit and is preparing all audit reports in online mode. I am glad to know that the organization is getting ready to use artificial intelligence in its functioning. You should be proud to be part of such an institution which has strengthened its position in the governance system over the years. It is the duty of the young officers like you to carry forward this rich legacy. Dear officers of Indian Revenue Service, you will be entrusted with the task of administration and collection of several duties and taxes. You should bring to this service the highest standards of integrity. Dear officers, challenges await you in various fields, especially narcotics and drug trafficking. You will be required to function in different domains as administrators, investigators, lawyers, and policy makers. You will also participate and contribute in negotiations of treaties of Government of India in trade, customs, and related areas. In order to perform these multifarious tasks with efficiency, you need to be updated about the latest advancement in all fields and also work hand in hand with officers of other services and departments. I am confident that you will rise to the expectations of the country and the people. Dear officers of Indian Statistical Service, you have joined the service which requires a high degree of proficiency in statistical methods and other applications. Data or statistics forms a very important base for all activities ranging from formulation of policies to analyzing the outcome of the programs and schemes. It is through statistics that the policymakers, experts, and citizens to know how the country is performing on key socio-economic parameters. These are the times when the world is keenly observing India's growth and performance. There is a need to generate accurate and high quality data sets using the latest techniques of international standards. With the increasing availability of information through numerous channels, the significance of authentic and accurate statistics has increased manifold. You need to use the latest methods from fields like artificial intelligence, big data, data science, and others for complying official statistics and managing survey operations. Dear young officers, I am confident that you will play the role of change agents in the progress of country's transformation into a developed nation. You should always
remember Gandhiji's Antodaya principle and work for the welfare of the last or the poorest person. You have to set new benchmarks during this Amrit Kal. I wish you all a bright future and illustrious career. May you make the country proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.